फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फेज़ आ जाता है इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज़ वैदिक एज। तो वैदिक जो है ये हमारा फेज़ रहता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, एंड बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो इसको टू फेजेस में जो है डिवाइड किया गया है ब्रॉडली। 1500 से लेकर 1000 वी कॉल इट द अर्ली वैदिक फेज, और इट्स आल्सो कॉल्ड ऋग वैदिक फेज। तो हमारा जो दूसरा वाला फेज है वो हमारा 1000 से लेकर 600 बीसी तक रहता है, दैट वी कॉल्ड द लेटर वैदिक फेज और इपिक एज। तो आज जो है हमारे फर्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आइडेंटिटी ऑफ वेदास या वैदिक या आर्यंस, वी आल्सो कॉल्ड देम द आर्यन पीपल। तो आइडेंटिटी हमें कैसे पता चलता है कि ये जो पीपल इस वक्त रहते थे इंडिया में, तो क्या हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडस वैली पीपल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। सेकेंड इज कि क्या ये माइग्रेट करके इंडिया में आए थे या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया थे। So these are the two important questions that historians deal with, and इसके बारे में जो है ये debatable questions हैं और बहुत सारा जो है रिसर्च की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल लिटरेरी टर्म देखें वेदा, तो इट मीन्स ए नॉलेजेबल पर्सन। तो इसी तरीके से अगर हम आर्यन देखें, वन बिलोंग टू ए नोबल फैमिली। तो आइडेंटिटी में अगर हम देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आर्यन पीपल और वैदिक पीपल एंड बिटवीन द ऑन द अदर हैंड इफ वी कंपेयर देम विद इंडस वैली पीपल। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सोर्स रहता है अर्ली वैदिक को स्टडी करने का, या फर्स्ट फेज हमारा जो है वैदिक फेज का, तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो हमारे पास है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, वी हैव ऋग्वेद। एंड ऋग्वेदा जो है इस वक्त जो पीरियड हमारा रहता है 1500 to 1000 BC। अलॉन्ग विद ऋग्वेदा वी हैव टू अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो हमें वैदिक कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वन इज़ फ्रॉम पर्शिया और मॉडर्न डे ईरान, दैट वी कॉल्ड जिंद अवस्था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बुक दैट डील्स विद द Zoroastrian people. And the second is from the Greek source, the book written by the Homer. तो अगर हम ऋग्वेदा की टाइमलाइन की बात करें, तो इसका जो अर्ली एडिशंस हैं यानी फर्स्ट एडिशंस हैं, दोज बिलोंग टू द 1500 BC, और जो लेटर एडिशंस इसकी हैं दैट बिलोंग्स टू दोज बिलोंग टू द 1000 BC। तो अगर हम जिंद अवस्था की बात करें, जो ज़ोरास्ट्रियन पीपल की रिलीजियस बुक है, इट बिलोंग्स टू द 1400 BC। और होमर की जो टेक्स्ट है ग्रीक सोर्स हमारे पास है, दैट बिलोंग टू 9th century BC to 8th century BC। तो इन तीन को जब हम कंपेयर करते हैं, वी कम टू नो अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द आर्यंस, और आर्यंस हाउ दे वर द डिफरेंट देन द पीपल अर्लियर लिविंग इन इंडिया। वी कॉल देम द इंडस वैली पीपल, or their identity is linked with the Dravidian people। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं डिफरेंसेस में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द एनिमल्स those domesticated by the Vedic people were different than those of Indus Valley people, particularly if we talk of the horse. So horse that is missing in the Indus Valley civilization, and we have only कुछ हमें डाउटफुल एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम सरकोटोडा ड्यूरिंग द इंडस वैली पीपल। लेकिन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट ए हॉर्स बेस्ड सिविलाइजेशन, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी सी द आर्यन पीपल, देयर मेन एनिमल वाज हॉर्स, and this horse was used for riding, this horse was used to fight wars, this horse was used to run the chariots, and even in many of the prayers that are mentioned in the Rig Veda and as well as in the Zindavesta and in Homer,
Homer's text also, people prayed for the horses, यानी लोग जो थे वो horses को हासिल करने के लिए along with the children, प्रजा के साथ साथ जो उनकी prayer रहती थी, जो भगवान से मांगते थे, those were the horses. The second important thing that make different Aryan people from the Indus Valley people, तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर जीनियोलॉजी. और जीनियोलॉजी की जो हम बात करते हैं, दिस आल्सो टेल अस देयर माइग्रेशन. इफ वी टेक a unique gene is taken from the people of that particular region, from that particular period, and if we take this a gene, a kind of gene called M17 from the Central Asian steppes, and when biologists work on this project, तो बायोलॉजिस्ट जब वहाँ पर डीएनए टेस्टिंग करते हैं या जीन को, पर्टिकुलर जीन जिसको M17 बोलते हैं, तो around 40% people in the Central Asian steppes found this type of gene, and in the Indo-European people similar type of gene is found. And when we test, when biologists conducted the test on the Hindi speaking people of Delhi, अराउंड 35% पीपल जो है, यानी 35% लोगों में जो M17 जीन पाए गए, एंड ओनली 10% जीन जो है वो द्रविडियन, यानी जो हमारे साउथ वाले पार्ट है लोगों का, जो जहाँ पर जो साउदर्न एरिया में, इंडियन के साउदर्न एरिया में लोग रहते हैं, ओनली 10%. सो दिस शो दैट ज़्यादातर जो आर्यंस थे, दे माइग्रेटेड फ्राम द सेंट्रल एशिया एंड दे सेटल्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया. So this suggests, this tells us about the migration, although the work is still going on, क्योंकि अभी तक कोई conclusively हम नहीं बोल सकते हैं कि ये वाकई तौर पर माइग्रेशन करके आए थे या ये इंडिया से ही बाहर गए हैं या यूरोप से आए हैं. लेकिन ये एक थ्योरी जो है ये बताती है कि on this gene basis, similarity of M17 genes, so biologists say that people migrated from Central Asia to India and their migration took place around 8000 BC. लेकिन जो लैंग्वेज की बुनियाद पे हम बात करते हैं, जो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है बिटवीन संस्कृत, बिटवीन इंग्लिश, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन ईस्टर्न दिस वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो इस सिमिलैरिटी की बुनियाद पे हम बोलते हैं कि ओनली इन 2200 BC people migrated from other parts to India. तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस हमें बताती है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ क्रीमेशन. यानी ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस वाज मिसिंग. तो क्रीमेशन जो था ये मिसिंग था, बट ड्यूरिंग द वैदिक पीपल वी सी द क्रीमेशन, यानी जो डेड्स थे उनको उनकी क्रीमेशन की जाती थी, जलाया जाता था. And not only the humans but animals were also cremated. And during the Indus Valley people we say the earth burial, यानी वो दफन करते थे. And there was a fractional type of cremation जिसमें बॉडी पहले एक्सपोज की जाती थी, इन द जो है एयर में एक्सपोज की जाती थी, यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में एक्सपोज की जाती थी. और जब इसको इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह इसका जो फ्लैश वो खा जाते थे, and then the bones were buried. So this is called a fractional burial. But during the Rig Vedic people, or during the Rig Vedic phase, we see the cremation, यानी fully तौर पर जो है bodies को, human body या animal dead bodies को जलाया जा रहा है. The third important thing is the use of birch. तो birch जो है, this is used during the medieval period. We come across, we this know that this was used for writing purpose. तो जो ये birch trees है, तो इसका जो यूज़ है that was missing during the Indus Valley people. लेकिन यहाँ पर जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था. Then again, if we take the Rig Vedic text, if we take the Rig Veda, the word ashwa, that means horse, it is mentioned around 215 times, यानी 215 बार इस वर्ड का जो है मेंशन किया गया है, अश्वा which means horse.
Then the word gawa and a cow, it is mentioned around 176 times, and bull is mentioned around 170 times. So this show that how important the these animals were for the these Vedic people. And if we see the Indus Valley people, their main priority was trade and commerce along with the domestication of animals. But डोमेस्टिकेशन जो है हमें ज़्यादातर ऋग्वेदिक पीपल जो है इन यहाँ से हमें पता चलता है, या वैदिक पीपल से हमें पता चलता है, इनकी सोर्सेज हम पता चलता है कि दे वर मच acquainted with the domestication of animals. Then the next important thing, if we see between Indus Valley people and these Vedic people, तो इसमें हम देखते हैं कि जो sacrifices, animal sacrifices है, that is much prevalent. जो ज़्यादा एनिमल sacrifices है वो ऋग्वेदिक या वैदिक पीपल में हमने देखा है कि यहाँ पर sacrifices were done on a large scale as compared to the Indus Valley people. So this is another important difference, and this show that the people after Indus were different than the one living during the Indus Valley people. Or फिर horse sacrifice was a unique feature of the Indus Valley people, and there is no such evidence under the during the Indus Valley. तो horse sacrifice, that's called Ashwamedha. तो Ashwamedha जो होता था खासकर royal horse का sacrifice. So this is a unique type of feature, and that we see during the Vedic phase. Then after that we see the these different gods. जो Indus Valley people के gods थे, we have no evidence regarding the temples. We have no evidence that what kind of worships they were doing, prayers they were doing. But under the during the Vedic period, we have evidence of certain gods: Indra, Mitra, Agni, Varuna. So these gods were worshipped during the Indus Valley people. And then again, one more difference is that made in people of Vedic phase different than the people of Indus Valley. That important difference is with respect to their this it is use of spoked wheels. So if we see the Indus Valley people, there is the evidence of hard wheel. तो वहाँ पर कोई spoked वगैरह wheel में नहीं होते थे. तो लेकिन हम Vedic people में देखते हैं, they made the use of the spoked wheels. Then the chariots, another important difference between Indus Valley and the Vedic people. The chariots were used on a large scale during the Vedic people, and that we did not see during the Indus Valley people. Then the use of arrows and offensive weapons. और इंडस वैली पीपल में हमें जो है किसी किस्म का कोई ऑफेंसिव वेपन नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर हमें यूज़ ऑफ एरोज, यूज़ ऑफ स्वर्ड्स एंड पर्टिकुलरली जो हॉर्स का एविडेंस हमें मिला है, दैट वाज यूज्ड फॉर नॉट फॉर द राइडिंग पर्पस बट आल्सो टू रन चैरियट्स एंड फॉर वार्स. तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है आर्यन पीपल्स का, वैदिक पीपल और जो है इंडस वैली. देन PGW, पेंटेड ग्रेवियर, एक यूनिक टाइप ऑफ पॉटरी जो है वो यूज़ होती थी ड्यूरिंग द आर्यन पीपल, एंड दैट्स मिसिंग इन इंडस वैली. एंड देन द पिट्स, जो हमें एविडेंस मिला है कि पिट्स का जो है इस दौर में जो है यूज़ हो रहा था फॉर डिवेलिंग पर्पस. तो इंडस में ऐसा कुछ भी नहीं था. तो दीज पिट्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीपल फॉर द डिवेलिंग पर्पस. तो इसकी एविडेंस जो हमें कश्मीर से भी मिली हुई है. So these are the some important things that gave us the clear indications, clear evidences that the after the decline of Indus Valley people, a new culture arose in India. New people came to India, and whose culture was rural, but the Indus Valley culture was the urban. So this clearly gave us the evidences, indicates that people were different than that of the Indus Valley people.